बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रजा जी बेटा। सर आपने एनएमआर की डॉलर में कितनी प्राइस बताई थी उसके एक्सपेरिमेंट की? एनएमआर की नहीं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की। जी जी सर, एक्सरे की। कुछ साल पहले तक तो 30-40 हज़ार डॉलर्स तक थी, डिपेंड करता था प्रोटीन के लेंथ पे। अब मेरे ख्याल चीपर होगी। सही। आपके पास मशीन है? नो सर, वैसे ही पूछा था। अच्छा अच्छा, इतने महंगे एक्सपेरिमेंट का आप पूछ रहे हैं ना, मैं इसलिए घबरा गया। नहीं सर, मैंने वैसे ही पूछा डू था। यू नो हाउ मेनी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मशीन्स वी हैव इन पाकिस्तान? सर पता नहीं, एनी आइडिया? तकरीबन होंगी 1500-1600। 1500-1600 और 1500-16? एक्सरे वाली सर? जी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मशीन्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की बात कर सर रहा हूँ। वो तो 10-15 ही होगी। मैंने सोचा कि शायद एक्सरे जो है एक्सरे हॉस्पिटल्स में होती वाली है। मशीन नहीं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मशीन्स फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सर वो तो मेरे ख्याल में 5-6 ही होंगी फिर। 5-6। एनीवन एल्स? आमना नवाज। जी बेटा। अरूज जहरा। अरूज जहरा। Anyone else want to know or want to share how many X-ray crystallographic machines we have for protein structure prediction? Maria Gul. Mariam Kasimi. Muzammil Hussain. Muzammil Hussain. Unmute your mic. Zarmina Kassar. सर नहीं पता। नहीं पता, ओके। Zainab 16856. सर नहीं पता। ओके। तहमीना लतीफ सर 10 से 20 इतनी होनी है, 10 से शायद 10 20। से 15। ओके, 10 to 15। रुकैया शफीक सर 10। 10। ओके। निदा फातिमा Nida Fatima 16836. सर नहीं पता। Okay, Muzammil Hussain, last chance. If you will not unmute your mic, I will remove you from the meeting. Misbah Kiran, सर 1 या 2। 1 या 2। Kashif Salim, Sir, just two, I think. you guessed 2. Okay, University or Institute? काशिफ सलीम, आप किधर बाइक पे कहीं जा रहे हो? Hira 16847. Yes, sir. Any guess how many X-ray crystallographic machines we have in Pakistan? सर मे बी 5 to 10।
maybe 5 to 10. Chaudhry Ali. Sir. Ali, who is Ali? यस सर। जी बेटा, कितनी मशीनें होंगी हमारे पास? सर मशीनें तो ये काम ही हो गई। दरअसल ना मैं गया था एक हॉस्टल में, इंडिपेंडेंट है वो गुलाम अहमदाबाद में। जी। वहां पे ना भाई की लेग का हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। वो ना एक्सरसाइज करवाते थे उससे, टर्न करवाती थी 160 के एंगल पे। वो तकरीबन फैसलाबाद में एक ही मशीन थी, उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल लाख 1.5 लाख होगी। तो इसका तो सर $35,000 एक्सपेरिमेंट का ही है एक खर्चा। तो ये तो फिर मुश्किल ही है ना कि पाकिस्तान में ज्यादा हो। बिल्कुल, नाइस एनालिसिस। अली रजा। यस जी अली रजा। सर, वो मैंने आपको बताया था कि वो लाख 1.5 लाख वाली एक ही है फैसलाबाद में। तो ये तो मुश्किल ही अच्छा है अच्छा, फिर ये वो आपने ही पाकिस्तान में। बताया। वो फिर चौधरी जी अली ने अनम्यूट नहीं किया माइक, आप म्यूट करें चौधरी अली। ओके, ही वांट्स टू लीव द मीटिंग आई थिंक। आयशा हफीज बेटा, आपका हाथ भी खड़ा था। Sir, 2. 2। हाउ यू आर सो डैम श्योर? सर शायद आपने बताया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा किसी ने Yes, बताया था, या शायद I इसके told बारे you में in था। the class. We have only Yes, 2, one in University of Sargodha and one is in yes, Nibji. sir. University of Sargodha has almost 5 to 6 or maybe 10 years back, but I heard that Nibji also bought in last year, maybe 2 years back. And if you will go to University of Sargodha and will give your sample to University of Sargodha for X-ray crystallography for your specific protein, maybe they will give back the results after 1 year or 2 years or 1.5 years, because they have so many customers, clients, and there is only one machine. It's the almost maybe 2 or 3 years back we have only one or two machines. Now maybe we have more, I don't know about that. Ji Ali Raza. Ali Raza, आप कुछ कहना चाहते पहले हैं? सर नहीं, मैंने वो हैंड राइज किया था लेकिन अच्छा, बाद में इसको किया ही नीचे नहीं। डाउन करने अप थक करता हूँ। जाएंगे, नीचे कर लो। जी जी सर। So we have the basic idea of that X-ray crystallographic machine that get the molecule whose structure you want to determine to form a crystal. Then you have to bombard a beam of X-ray through crystals on that specific molecule, and then you will have that diffraction pattern on the beam, a pattern of spots of varying brightness. Different level of brightness depends on the diffraction of the electrons on the foil, and then you have to annotate the results. Like here in this diagram, as we saw the diagram, this one, that we have bombardment of electrons on an object, then there are diffraction on the lens, and then we will annotate the results. And here we just summarize that this green box depicts that this is an experimental work, and this in purple, it is a computational work. Like you have to perform the experiment for the bombardment of electrons on an object, and then you have to take the diffraction on the foil, and after that you have to take that results from the lens and generate an image with the help of computer tools and computational powers. So this experiment needs both experimental researchers and computational researchers to solve the crystal of a specific protein. After that, we have crystals. What is crystal? Under certain conditions, molecules line up into a regular grid. You guys know about grid or lattice? Anyone wants to share? Ji Kashif Salim. Kashif Salim. सर ग्रेड स्ट्रक्चर जो होता है जो स्क्वायर शेप में सर लाइन में होता है सर, अलाइनमेंट होती है स्क्वायर शेप में उसकी, एक और specific, लिस्ट होता है जो सर ऊपर से नीचे होता है। जी जी इसी तरह ही है बेटा। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक एंगल के साथ, या एक स्पेसिफिक आप कह लें बॉक्स जो होता है उसको ग्रिड कह देते हैं, लैटिस भी कह देते हैं। ठीक है जी। आपके पास एक्स एक्सरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है। ठीक है जी, ये आपको याद होगा उसमें फिजिक्स में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो ये वाला बॉक्स भी 3 डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, एंड वी जस्ट
collect all the information from all the x's to annotate. So here is the example of table salt, NaCl. So you guys know about that. NaCl is sodium chloride. It has one molecule of sodium and one molecule of chloride. Chloride has negative charge and sodium has positive charge. You know about this very well. So here is the, in this figure we have the crystal structure of salt, and here it is the lattice. Like you can see three-dimensional in x-axis, y-axis and z-axis. The green color is showing, the green balls are depicting the chloride, and it has negative charge. And then we have a sodium in blue color balls that has positive charge, and it is like a crystal or a lattice or a grid of NaCl, sodium chloride. We have the link here if you want to see this. Okay, we have different types of grids here. Asymmetric unit cell. It is just for your in general knowledge. So here in small one, this is the entire crystal. You know, it also has three axes: x-axis, y-axis, and z-axis. If you have a simple cubic, it will be like this way: face-centered cubic, body-centered cubic. So this is the different types of the grids or the crystals we have. Usually we just have different types of crystal. Like you guys remember sugar, चीनी देखिए, चीनी का क्रिस्टल कभी देखा है आप लोगों ने गौर से? कितने एंड्स होते हैं उसके? एनीवन? सर 6 भी होते हैं, उसके 8 भी होते हैं। 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो डिफरेंट उसके जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं। डिपेंड करता है हेक्सागोनल है वो, ऑक्टागोनल है, पेंटागोनल है, डिपेंड करता है वो किस तरह उसका क्रिस्टल बना हुआ है। तो इसी तरह ये सारे के सारे क्रिस्टल्स हैं। जैसे ये हेक्सागोनल है, ये जो ब्लू हुआ है थोड़ा सा, ये चीनी का कह सकते हैं, अगर उसकी 6 साइडें हैं तो हेक्सागोनल हो जाएगा ये। So protein can also form crystals. Do you guys know about that? Anyone? जी काशिफ। सर क्रिस्टल फॉर्म्स यस सर करती हैं प्रोटीन सर, क्रिस्टल फॉर्म्स में होती हैं सर। क्यों सर? जब हम सब प्रोटीन सेपरेशन करते थे वो हमारे पास प्रेसिपिटेट की सर शेप में आती थी जो प्रोटीन, सर क्रिस्टल फॉर्म्स होती थी। क्रिस्टल फॉर्म्स होती थी उसकी, पक्की बात है? यस सर। चलो वेरी गुड। सो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो भी क्रिस्टल फॉर्म में इसलिए होते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर इसी तरह ही होते हैं क्योंकि हम उसमें एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं और जो उनके शेप बनती है उसको बाद में कंप्यूटर टूल्स के जरिए एनालाइज करते हैं। सो इंसुलिन का ये क्रिस्टल बनाया गया है जो ये फिगर में आपको शो किया जा रहा है, ये इंसुलिन का क्रिस्टल है जो कि एनालाइज किया गया है। So here we have multiple views of crystal formed by immunoglobulin binding domains and PDB entry 1PGB का ये एक क्रिस्टल बनाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा enlarge करता हूँ आप लोगों के लिए। So it is like this way. If you can have a look clearly, or this one is also. So this is also a grid if you can see here in x-axis, y-axis and z-axis. This white lines is also the grid. So this is the crystals of immunoglobulin binding. Here we have, if we have only one molecule, maybe the crystal transformation of the crystal will be like this way. If you have 2 molecules, it will be like this way. 8 molecules, diffraction will be like this way. And if there is 15 molecules, the diffraction like this way. Okay, what are the applications of hexacrystallography? Anyone wants to tell me? Humaira Saleem 16853. Please unmute your mic, Humaira Saleem. Yes sir. जी बेटा, applications of hexacrystallography बताना चाहेंगी कोई? Sir, I have no idea. Okay. Ikra Saeed 16854. Unmute your mic. Yes sir. बेटा एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, कोई एप्लीकेशन बताना चाहेंगे? सर ये हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताता है, इसकी एक्सरे की डिफ्रैक्शन होती है ना, इससे हम क्रिस्टलाइन मटेरियल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं।
ओके और ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल भी इसमें डिटरमाइन करते हैं। ओके मिसबा किरण 16804। जी सर। बेटा कोई एप्लीकेशन बताना चाहेंगी आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की? सर नहीं ओके ओके नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जैनब 16856। जैनब वन सर नो आइडिया। नो आइडिया। जुनैरा अदरीस 16825। जी सर। बेटा कोई एप्लीकेशन सर बताना। प्रोटीन जी बेटे। के लिए 3D स्ट्रक्चर के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सर, सॉल्व जैसे कि आपने लिए। बताया वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के बेटा, लिए। वेरी गुड। हफ्जा अनायत 16827। जी सर, मेन तो ये प्रोटियोमिक्स में उसके 3D स्ट्रक्चर की 3D स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए होता है, और दूसरा ये क्रिस्टल्स का साइज को पार्टिकल्स के साइज को फाइंड करने के लिए इनकी मेजरमेंट के लिए। ओके फातिमा तुज ज़हरा 16820। बेटा आपका हाथ खड़ा है जी। फातिमा तुल ज़हरा। काशिफ सलीम। जी जी बेटा जी बताएं। यस सर। काशिफ एक सर मिनट आप प्रोटीन होल्ड करना, काशिफ आप होल्ड करना 1 मिनट। जी फातिमा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं, उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन को डिटरमिन करने के लिए भी वेरी गुड। यूज होती है। जी काशिफ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है कि ये स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता नहीं है नहीं एप्लीकेशन प्रोटीन के। बतानी है, एप्लीकेशन उसके डिस्कस अलावा को छोड़ दें आप, एप्लीकेशन एक बता दें। इसके Yes, अलावा बताएं जो बच्चों ने बताई है सर। अभी इसके अलावा। और सर हम अरेंज और डिसअरेंज स्ट्रक्चर इसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर अरेंज है, कौन सा मतलब प्रॉपर अरेंज नहीं है। एक उसके कहानी अलावा हम सुनाऊं सर आपको छोटी सी काशिफ। इसमें ओरिएंटेशन। यस सर। जब मैं बीएस में था ना, जैसे आप बीएस में हो, तो हमारी एक बड़ी ही मोहतरम यस उस्ताजा थी, टीचर। उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी, सपोज व्हाट इज आइटम और सपोज व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और उनकी डेफिनेशन उन्होंने बोर्ड पे लिख दी। उन्होंने क्लास की एक स्टूडेंट से कहा आप खड़ी हो जाएं और बताएं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा मैडम नहीं आती। मैडम ने उनको डांटा, दूसरे स्टूडेंट से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे नंबर पे मेरी बारी आ गई। तो सर ने, मैडम ने कहा अरसलान खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा अरसलान व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मैंने बोर्ड के ऊपर से सारी डेफिनेशन पढ़ के सुना दी। मैडम कहती वेरी गुड, बैठ जाएं। तो जो स्टूडेंट जिसको डांट पड़ी थी ना, उसने कहा मैडम अरसलान ने बोर्ड से पढ़ के सुनाई है। मैडम कहते आप भी बोर्ड से पढ़ के सुना देते, मैंने मना किया था। मैंने आप सबके सामने स्लाइड ओपन की हुई है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, लेकिन आप में से कोई भी वहां से पढ़ के नहीं सुना रहा। ऐसा क्यों है? सर एक इधर बच्चा से मैंने ढूंढ रहा था, मैं सिर्फ एक बच्चा ढूंढ रहा था। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी काशिफ सलीम कोई एक बता दें। सर ये क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस मटेरियल के दरमियान डिफरेंशिएट करता है। उसके अलावा सर ये ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल बस का बस बताता है एक सर। ही एक ही बस एक ही। यस महताब अली। ओके सर। महताब अली। महताब अली आप बोलोगे बेटा? ज़ैनब 16856। सर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है जी डिफ्रैक्शन में, और अमोर्फस होते हैं कुछ और वेरी गुड। बिटवीन क्रिस्टल्स। जरमीना कैसर 16850। सर ये डिटर्मिनेशन करता है क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को। समरा 16848। सर पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे वो स्ट्रक्चर्स थे जो आपने दिखाए। हमारा सलीम। यस सर। बेटा एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी।
सर सब तो इन्होंने बता दी हैं। बेटा आप रिपीट कर देते, एडवांटेज बता दें कोई। सर सबसे मैं तो इसके ऊपर से देख के बता दूंगी। बेटा मैंने आपको रोका नहीं है, बताएं तो सही। सर एक्सरे जो एडवांटेज है वो चीपेस्ट होता है और सना अफजल 16860। cheapest and most convenient and usually method. Okay, thank you beta. So there are some advantages and disadvantages of X-ray crystallography in bioinformatics. We have a, not in bioinformatics, in proteomics and in biology, we can use the X-ray crystallography to solve the structures of three-dimensional structures of proteins, DNA, RNA, their interactions and different experiments. But it is cheaper for the, now it is bit cheaper, but in actual it's not much cheaper. And X-ray crystallography are observed very much by the air, are not observed very much by the air, so you can save some money and some waves also. So but there are so many disadvantages of this technique also. It takes much time. Sometimes it just got the structure that is not in actual the structure of the protein. Usually not, but sometimes we have the structure that in actual is not the structure of the protein or the specific material we are going to solve that. What is caveats? Caveat किसे कहते हैं? अक्सा नईम 16843। आयशा हफीज। जी सर। What is caveat? सर नहीं पता सर। caveat का नहीं पता आपको बेटा? मिसबा किरण 1684804। जी बेटा caveat किसे कहते हैं? सर। बेटा आप लोग लैपटॉप से सर ये ऑनलाइन हो कि अपने प्रोटीन मोबाइल से? अडॉप्ट कर लेती है डिफरेंट। मोबाइल से। सर मोबाइल से। लैपटॉप्स नहीं है आपके पास? सर है सर, वो बेटा सर जितनी देर उसमें में कोई मसला। टीचर क्वेश्चन पूछता है उतनी देर में तो जो बच्चे इंटेलिजेंट या थोड़े स्मार्ट होते हैं वो जल्दी से गूगल से देख के आ जाते हैं कवीट का मतलब। आप सब इंतजार करते हो कि जब सर हमें कहें तो हम आगे से कहें सर नहीं आता। जी मिसबा किरण। सर प्रोटीन अडॉप्ट कर लेती है डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ क्रिस्टल, तो सर वो प्रोटीन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहती। बेटा मैंने पूछा कवीट का लफ्जी मतलब क्या है? जुनैरा दरीस। सर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस। फातिमा। जी बेटा बोलें। सर कैविट का मतलब ये लिमिटेशंस हैं, कंडीशंस हैं और स्टिपुलेशंस हैं। कंडीशंस ओके। काशिफ सलीम। काशिफ। सर एनी वार्निंग और वार्निंग, यस आप सही पहुंचे हो। तो वार्निंग देना, किसी को बताना उसकी क्या ज्यादा मतलब नुकसान क्या हो सकता है, दैट्स कॉल्ड कैविट्स। नेक्स्ट एक्शन करने से पहले बताना क्या करेंगे, वार्निंग देना। वेरी गुड बेटा। So sometimes a protein will adopt a different structure in a crystal than it does it in the natural environment. We already discussed that sometimes we have the structure that is not in actual the structure of the protein. So you guys know very well that protein is always in dynamic form, right? So protein always change their structures. So sometimes they just got the structure that is not in actual the structure of that protein. So this is the drawback or the warning or the limitation of the X-ray crystallography. And X-ray crystallography gives a static snapshot of the protein structure. Again, we already discussed that protein is always in dynamic form.
and in X-ray crystallography we got the static shape. So suppose if a protein is in angle of 50 or angle of 100 has a structure, so we will get that structure. But in actual, the original the other structure on the angle of 180 may be the different one. So this is also another caveat, warning, or limitation of this technique. Usually, but not always, this snapshot correspond to the protein's average structure. Yes, we will get the average structure of the protein. So we will conclude that something is better than nothing. The concept of something is better than nothing, that if you have no structure, so it's better you have some structure. Not always. Usually we will get the good structures or the exact structures or the most similar structure of the protein. जी काशिफ सलीम. सर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोटीन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है सर, तो इस सिचुएशन में सर क्या पॉसिबिलिटी है सर? बिल्कुल इसी तरह ही है, तो डिपेंड करता है, फिर आप डिफरेंट कंडीशंस में उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाद में उसको समराइज करते हैं. Yes. So getting proteins to form crystals can be hard. It's very hard. Crystallographers sometimes work for decades to get good crystal for a particular protein. So here is the answer of your question, Kashif Salim. They have to spend much time, sometimes more than years, to get a good structures. Usually, actually, when a researcher work on a protein for a long time, he has a sketch of the structure in his mind, because he knows much about that protein. He is working on the protein from 5 years or 10 years from wet lab or from different experiments. He has a structure in his mind that maybe the protein will be like this shape. So after X-ray crystallography, if the shape is different, then he just deny that structure. He refuse the structure because he has the structure in his mind. So after that, he just perform many experiments to get the exact structure in actual they have in the mind or with the other experiments. So here we have some limitations of that. We are going to summarize our lecture. What is X-ray crystallography? So we are not jump in depth in this article because our main focus was on computational drug designing and bioinformatics 3. So it is another experimental technique, but we should know what is happening in X-ray crystallography and NMR, nuclear magnetic resonance. That is also for the structure prediction of or you can structure solvation of three-dimensional structures of proteins or RNA or DNA. In NMR, you have the solution structure and you have different peaks of graph, peaks in graph, in actual, so many peaks. And then the computational scientist or the experts just read that peaks and generate the structure. So we will discuss in detail about NMR in our next lectures. But in X-ray crystallography, you guys know that it was discovered in 1895, and the guy who just discovered this got the Nobel Prize in 1901. He just suddenly or accidentally, you can say, just got the wavelength of specific ray, and he was not known about the ray before, so he just named it as X-ray, and then it's X-ray crystallography from almost 125 years back. From that time to till now, it is X-ray crystallography. X mean unknown ray at that time, but now we know much about X-ray crystallography, that its wavelength, its intensity, they are invisible, and their penetration level and their efficiency and their power, and also the limitations of this X-ray crystallography and the waves in actual X-ray. So we have an X-ray tube that has an anode and cathode, and then there was bombardment of electrons. When you also know about atom, that atom has a nucleus has a proton and neutron has neutral charge, proton has positive charge, electron has negative charge. There are different shells of the atom, and every shell has a specific number of electrons, and when an electron moves from lower shell to upper shell, it has to gain some energy. Like if you are climbing a wall, you need energy to go up, and if you are just jumping, you don't need much energy to jump, you maybe release some energy.
So running of time again on my screen and disturb me. So if the electron moves down from upper shell to the lower shell, then it will release some energy, and that energy will utilize for different experiments also. So you also have the concept of ATP into ADP and AMP, and these all concepts are for the energy release or energy gain concept. Same concept we have here in electron moving from one shell to another shell. If electron is moving from upper shell to lower shell, it will release the energy, and if the electron is moving from lower shell to upper shell, it will gain energy from the environment. Anyone has any question? Then we have a concept of diffraction and reflection. That diffraction is when there will be an obstruction there, and the wavelength of the X-ray beam just strike on that obstruction and then diffract or maybe reflect, depends on the nature of the obstruction or the nature of the ray. So it will reflect or it will diffract. I hope you guys will recall your concept of diffraction, reflection, so you can have a better sketch of these concepts. Anyone has any question, please raise your hand. Any question? No one? Ali Raza. 16868. जी सर जी बेटा समझ आइए कुछ? जी सर वेरी गुड. ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, तो इसको बेटा तवज्जो से दोबारा पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है. एवरीवन प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज. Because of this pandemic, don't damage yourself. Stay home, stay safe, protect your families, pray for your families, and please be safe. Focus on your studies, read and learn much in this time. Avail this time, don't waste this time. Please avail this time. Fatma to Zara, जी बेटा. सर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होनी है, मतलब 6:30 वाली आपने टाइम दिया हुआ है ना? जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा. See you in 3 or 4 minutes, everyone. Thank you.